Good morning, students. This is your lecture 5 of Concrete Technology, chapter 1, Cement. So, if you remember, the last lecture we studied about the laboratory test of of cement, and we finished studying about soundness test, consistency test, and then we had started setting time test. And in setting time test we have two type of tests. Like in setting time we need to conduct two tests. One was initial setting time test and the other one was final setting time test. I'm just brushing up so that you remember and come on track. And then we finished studying about initial setting time test, and the apparatus that we had used for doing initial setting time test was, if you remember, which instrument was it? Yes, it was VCAT apparatus. Okay, so this is your VCAT apparatus. I had already explained, but just to show. Okay, and this is the needle or the plunger that we use for initial setting time test. Can you see this? Right, we use for initial setting time test. And if you see the dimension of this plunger, okay, this plunger here, they have seen the dimension of this plunger. Okay, this plunger, what is it? Its plunger is, I'll show you, its diameter is how much? 10 mm diameter, and height is 50 mm 50 mm. So this plunger was inserted inside the cement, right? Insert the cement, and then we what did we do? Every time we need to measure how much penetration, how much did this needle penetrate the cement block. Okay, and how much distance it penetrates, that will be shown in this scale. Okay, in this scale. And we have to keep continuing the penetration up till this needle will penetrate up to how much? Up to 5 mm from the bottom. Okay, so and that time will be considered as initial setting time test. That was what we studied. Now if we see final setting time, in final setting time test, the only difference we do is we change this needle. Okay, we change this needle. Okay, we change this needle, this plunger, and insert a new type of plunger, this plunger. Can you see this? We insert this plunger. This needle is known as a needle with annular ring. Yani ki, can you see, this is the needle and then it has a ring. It has a ring. If you if you look at its plan view, okay, this is the plan view. If you look at its plan view, you will see that this is the ring, this is the needle, and then this is the annular ring. Okay, so the only difference is that we, in a final setting time test, we change the needle from this plunger, okay, from this one to this one. Okay, so this is the change we do. Let me just rub it so that it does not become messy. Okay, so we will see. Let us study the final setting time test procedure. Okay, point 1. The needle for determining the initial setting time test, C, is, what is it? It is replaced by the final setting time needle with an angular attachment. So हमने क्या किया? Final setting time procedure में क्या करेंगे? बस वो जो needle हमने पहला यूज किया था initial setting time, उसको replace करके नया needle यूज करते. और वो needle कैसा था? Needle with annular ring. There was a annular ring like this. Okay. Second point, it is then released on top of the surface of the mold at regular interval and the time is recorded. So now see, okay, जो अब now what will we do? अब हम उसी same cement, उसी same paste, ठीक है? The same paste that we use for initial setting time test, okay? That same paste we will use. And remember, the time is, the stopwatch is still
गोइंग ऑन, द स्टॉप वॉच हैज नॉट स्टॉप, ठीक है, टाइम हम अभी भी नोट कर रहे हैं। कब से नोट कर रहे हैं? जब से हमने सीमेंट में पानी डाला है उसी टाइम से हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो हमको ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स तक मिल जाता है हमको, ठीक है। बाय 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, मिनिमम मैक्सिमम 40 मिनट्स तक हमें इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट मिल जाएगा। अब ये टेस्ट जो है फाइनल सेटिंग टाइम, वी नो दैट जनरली कि फाइनल सेटिंग टाइम होने के लिए ऑलमोस्ट मिनिमम 10 घंटा लगता है, ठीक है। तो हम ये फाइनल सेटिंग टाइम उसी तुरंत नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट द वैल्यू, बिकॉज वी नो द आंसर शुड कम नियर अबाउट 10 आवर्स, ओके। तो लेट अस सी, हमने जब हम 7 आवर्स या 6 आवर्स होंगे तब हम उसको एक्सपेरिमेंट करने शुरू करेंगे, ठीक है। जब पेस्ट, मानो अब पेस्ट बना के 6 आवर्स हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो नीडल को चेंज करके ये वाला नीडल, एनुअल रिंग वाला नीडल लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट देखो, इट इज रिलीज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द मोल्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड द टाइम इज रिकॉर्डेड। फिर हम उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। वो जो नीडल है उसको हम छोड़ देंगे, यानी कि सीमेंट पेस्ट में, ये आपका सीमेंट पेस्ट है, ठीक है, उसमें हम इसको छोड़ देंगे। तो अब क्या होता है, ओके, लेट अस सी द थर्ड पॉइंट। इन द बिगिनिंग द नीडल एंड द कॉलर विल मेक इम्प्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द पेस्ट, ओके। तो शुरू में, यानी कि शुरू में, इफ यू सी, let us see this point, okay, can you see this, ये वाला, या फिर let us see this is much more clear. In the beginning, आप जब उसमें देखोगे तो उसमें एक इम्प्रेशन बना है, जैसे स्टैम्प बना है। आप कोई भी पेपर में कोई स्टैम्प छापते हैं तो स्टैम्प लगता है ना, सिमिलरली जो ये एन्युलर रिंग जो है, ये रिंग जो है, जब हमने इसको उसको हमने रिलीज कर दिया तो सीमेंट पे वो एक स्टैम्प छोड़ा, ठीक है। और हमें पता है इसका प्लान कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये स्टैम्प उसने छोड़ा, तो इनिशियली आपको दोनों दिखेंगे, ठीक है। ये बीच का सर्कल का दिख रहा है आपको, दिस इज द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द नीडल, ओके, दिस इज द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द नीडल। और जो बाहर का जो गोला दिख रहा है आपको, सर्कल जो दिख रहा है, ये कैन यू सी दिस सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल जो दिख रहा है, ओके, ये है आपका कॉलर का इम्प्रेशन, यानी किसी एक नीडल है, नीडल का इम्प्रेशन कैसा आएगा, डॉट आएगा, और एक कॉलर है, ठीक है। तो उस कॉलर का इम्प्रेशन कैसा आएगा, हमने अभी प्लान में देखा था, वो आएगा सर्कल। तो शुरू में अब दोनों का इम्प्रेशन आया, ठीक है, दोनों का इम्प्रेशन आया है, नीडल का भी आया है और कॉलर का भी आया है, ठीक है। यानी कि अभी हमें पता चला कि अभी आपका सीमेंट जो है वो फाइनल सेट नहीं हुआ है, यू नो दैट योर सीमेंट हैज नॉट फाइनली सेट। सो अगेन आफ्टर, अभी 7 आवर्स है, मानो 1 घंटा के बाद फिर से करेंगे, आफ्टर 8 आवर्स अगेन वी विल रिलीज द नीडल। अब लेट अस सी 7 आवर्स के बाद वो ऐसा निकला, ठीक है। अब इसमें देखो आपको इम्प्रेशन थोड़ा हल्का हो रहा है, राइट, नीडल का इम्प्रेशन थोड़ा कम हो रहा है, और बाहर का जो देखो जो सर्कल जो है वो भी कम हो रहा है, राइट, यानी कि अब वो थोड़ा सेट होना शुरू हो गया, ओके। लेट अस रीड द थर्ड पॉइंट का जो हाफ यहाँ से पढ़ेंगे, लेट अस रीड। अब क्या नोटिस करना है हमें, ठीक है। When the cement is fully set, the needle only will make impression and the collar will fail to do so. Now this is the important point. अब वो क्या बोल रहा है कि when your cement will be finally set, जब final setting time achieve होगा, तो ये needle जो है, मानो जो impression जो देंगे जब आप उस needle को छोड़ेंगे, तो वो बस नीडल का इम्प्रेशन देंगे, लेकिन जो ये बाहर का सर्कल जो था उसका इम्प्रेशन देना बंद होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस वाला, अगर आप इस पिक्चर में नोटिस करेंगे तो आप देखो इसमें नीडल का इम्प्रेशन है, लेकिन जो बाहर का सर्कल का जो है वो बहुत हल्का आया है। अगर आप पहला वाला कंपेयर करोगे या ये वाला कंपेयर करोगे तो देखो इसमें कितना ज्यादा डार्क सर्कल आया है, कितना डार्क सर्कल दिख रहा है, यानी कि सीमेंट सेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इस वाले में देखोगे तो इसमें बस इस वाले में देखोगे तो इसमें बस डॉट है, ठीक है, डॉट है, यानी कि नीडल का इंप्रेशन पड़ा है, लेकिन जो बाहर का कॉलर का इंप्रेशन जो है वो देखना बंद हो चुका है। यानी कि उस टाइम जिसमें नीडल का इंप्रेशन दिखेंगे लेकिन कॉलर का इंप्रेशन जो है, कॉलर का मार्क वो देखना बंद होगा, उस टाइम को हम लेंगे एज फाइनल सेटिंग टाइम, ओके।
मतलब क्या है, अब क्या हो गया है, अब सीमेंट जो है, लेट अस रिवाइज, ओके। फाइनल सेटिंग टाइम क्या था? फाइनल सेटिंग टाइम इज दैट टाइम when the cement completely loses its plasticity, right? यानी कि जब सीमेंट पूरे तरीका से उसका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज होता है, यानी कि मोल्डेबल प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं कि सीमेंट फाइनली सेट हो गया। कितना टाइम लगा सीमेंट को सेट होने में, वो टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। और प्लास्टिक क्या था, इफ आई रिवाइज, प्लास्टिक मतलब, प्लास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जब तक आपका सीमेंट मोल्डेबल है, यानी कि जब तक उसका शेप चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, क्ले की तरह जो आते हैं ना खेलने के क्ले की तरह, तो उसको कोई भी शेप चेंज कर सकता है। तो सिमिलरली सीमेंट भी जब वो सेट नहीं होता है तो आपको उसको कुछ भी शेप में बना सकते हो ना, सर्कल, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल। तो यानी कि तब तक आपका सीमेंट प्लास्टिक है, लेकिन जिस मोमेंट पर आपका सीमेंट का शेप चेंज होना बंद होगा, यानी कि वो मोल्डेबल प्रॉपर्टी उसका लूज होगा, तो हम उसको बोलते हैं कि वो फाइनल सेट हो गया, तो उसका प्लास्टिक प्रॉपर्टी पूरा लूज हो चुका है, ओके। सो ये जो दो टेस्ट है, आपको वो ये सब अच्छे से याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट में मेनली क्या क्या टेस्ट है, एक है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, एक है अनसाउंड टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है। नाउ let us go to new topic, that is cement storage, okay, and precautions to be taken while storing the cement at site. So we know guys that जब when a cement is brand new, okay, तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो फुल होता है, अभी अभी नया लाया है तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगा ना। लेकिन अगर हम उस सीमेंट को बहुत स्टोर करेंगे, बहुत लंबे समय तक स्टोर करेंगे, तो क्या होगा, वो सीमेंट जो है वो जो एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी जो है, पानी वगैरह मॉइस्चर, उसको एब्जॉर्ब करने लगेंगे, और एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉर्म लम्प्स। लम्प्स मतलब समझते हो ना, लम्प्स मतलब यू नो नॉट पाउडर, पाउडर नहीं, जब कोई भी चीज थोड़ा हार्ड होने लगता है तो ऐसे लम्प्स फॉर्म होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लम्प्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी देखो आप, अगर हम सॉइल को हमेशा हम उसको डीप करें, उसको अच्छे से खोदे, तो क्या रहता है, वो एकदम लूज, एकदम पाउडरी रहता है। लेकिन मानो आपने उस सॉइल को हाथ ही नहीं लगाया 2 3 4 महीने तक ऐसे रखते हैं, तो क्या होगा, सीमेंट पाउडर रहता है, नहीं रहता ना, उसमें थोड़ा लम्स आना लगता है। तो सिमिलरली सीमेंट में भी वैसे होता है, अगर आप बहुत टाइम के साथ उसको स्टोर करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो lumps form hona shuru hoga because of the humidity present in the atmosphere. Also it starts to lose its strength, because of that it starts to lose its strength, okay. So that's why when you store cement at site, okay, when you have to store cement at site, you need to take some of the precautions, all right, and we will see what are some of the precautions that you need to take. Number 1, bags should be stacked. Bags should not be stacked more than 8 bags high, and not more than 15 bags are allowed, okay. तो क्या बोला, जब आप सीमेंट के बोरे, सीमेंट सैक्स को मैक्सिमम हम कितना कितना स्टैक्स, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा करके, ठीक है, सीमेंट बैग्स को कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम हम 8 बैग्स रख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अलाउड। बट समटाइम्स कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि स्पेस बहुत कम पड़ा, या फिर ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पर आपको 8 बैग से ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है, फिर हम मैक्सिमम 15 बैग्स तक उसको हाई बना सकते हैं, ठीक है, 15 बैग्स तक उसको पाइल अप स्टैक कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 15 बैग्स, ऑलराइट। सेकेंड वन, all bags must be stored at least 300 mm away from the walls for better and easy handling, okay. So अब क्या बोल रहे हैं, अब जो बैग्स जो होगा, ठीक है, और ये आपका वॉल है, ये आपका वॉल, दिस इज योर वॉल, लेट मी राइट, दिस इज योर वॉल, ओके। तो बैग्स और वॉल के बीच में एटलीस्ट डिस्टेंस कितना होनी चाहिए, 300 mm होनी चाहिए, ठीक है।
मेनली क्यों? फॉर इजी हैंडलिंग, ताकि जब आप काम करेंगे तो इजीली काम कर पाए और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, सो दैट द एरिया डजंट बिकम टू स्टफी and too congested, and it is easier for you to work. Now let us see the third point. 1 meter wide passage are required to be kept in such a manner that old stock of cement can be removed without disturbing the fresher stocks stored in the godown. So what is it saying? That her bag, between each bag, okay, let me show you. Between each bag, okay, this is one bag, the another bag is here. So there should be a minimum distance of, between this, uh, sorry, the minimum distance between these two bags, should be 1 meter, yani ki this distance should be 1 meter. Okay, mainly why? So that so that when we remove the cement, okay, when you remove the old cement, then it will be easier for you to handle, and there won't be any falling of cement bags or any kind of problem. And that's why at least you need to keep 1 meter distance. Now fourth point, wooden planks or sleeper covered with plastic sheet should be kept on the floor. Okay, so the floor in which you are going to store your cement, first thing, it should either be of wooden planks or sleeper covered with plastic sheets should be kept. और अगर आपके सीमेंट बॉल कोल्ड ऐसा है तो उसमें एक प्लास्टिक शीट्स लगा देंगे. ये मेनली हम क्यों करते हैं? We mainly do that so that the cement bag does not catch any moisture from the ground. Okay, sometimes if the ground is absorbing moisture, if the ground is too wet, then somehow that moisture can be absorbed by the cement bags. So we don't want that to happen, because we know that when the cement bag starts to absorb water, then it starts to lose its strength. Now let us see fifth point. Install strip heaters in walls at suitable locations if humidity is high. Okay, so what is it saying? Ki if humidity is high, like in places such as Mumbai, you know that the humidity is very high, बहुत चिपचिपी होता है ना वहाँ पर. So in such places, what can we do? We can put the small strip heaters जो walls में attach किया होता है, ऐसा strip heaters लगा सकते हैं, so that it dries away the moisture and then the cement does not absorb any humidity. Sixth point, install exhaust fans or blank walls to improve ventilations. Okay, so in order to improve ventilation, अगर उसमें proper ventilation होते रहेंगे तो जो air या water, जो moisture जो है वो जो उस room के अंदर है वो भी बाहर जा सकते हैं. तो proper ventilation होगा तो सीमेंट को भी थोड़ा air मिलेगा और उसमें humidity वगैरह gather नहीं हो सकता. Number 7, trucks should not be allowed to enter the storage shed. Okay, as dirt and moisture can contaminate the cement. So this is important point. When the trucks come to load and unload the cement, okay, when it comes to unload the cement bags, then you should make sure that the truck should not come inside the shed only. जहाँ पर आपका cement store होने वाला है उसके अंदर तक नहीं लानी चाहिए, because that way जब truck जो है उसके साथ धूल मिट्टी और कितने सारे contaminants वगैरह लाए होगा या फिर उसमें मॉइस्चर, उसकी व्हील्स वगैरह में पानी वगैरह होगा, तो ये सब गंदगी वगैरह लाने का चांस है गाड़ी अगर अंदर लाए तो, जिसकी वजह से आपके सीमेंट में भी वो गंदगी जो है, डर्ट जो है वो अंदर घुस सकता है, जिसकी वजह से आपका सीमेंट कंटामिनेट हो सकता है. ठीक है, एंड दिस इज वेरी बैड. यू शुड नॉट लेट एनी कंटामिनेशन हैपन टू योर सीमेंट. एंड 8 point, open storage must be avoided during monsoon in any case. Okay, that's obviously like when you during monsoon, yani ki when it's going to rain a lot, you should not store your cement in any open place जहाँ पर कभी भी बारिश आके गिर सकता है. ऐसे जगह पे आपकी सीमेंट कहीं भी रख नहीं सकते, क्योंकि अगर सीमेंट में पानी आ गया तो समझो खेल खत्म. Why? Because अगर सीमेंट में पानी लग गया तो obviously पानी और सीमेंट मिक्स होगा तो क्या होगा? हाइड्रेशन रिएक्शन होना शुरू होगा. हाइड्रेशन रिएक्शन होना शुरू हुआ तो सीमेंट सेट होने लगेंगे, हार्ड होने लगेंगे, अच्छी तरीक़ा से भी नहीं होगा, तो वो सीमेंट पूरा वेस्ट हो जाएगा. ठीक है.
9. Loading and unloading of cement bags onto the trucks should be done under proper cover during the monsoon. Okay, तो जब हम लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे सीमेंट बैग्स का, ऑलवेज मेक श्योर दैट देयर इज अ कवर, कोई छत होनी चाहिए, कोई रूफ के नीचे करनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर सीमेंट बैग्स को हम ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो सीमेंट बैग्स को खुला गाड़ी में नहीं रखनी चाहिए, उस सीमेंट बैग्स को एटलीस्ट प्लास्टिक से कवर करके ले जानी चाहिए। Now let us see the effect of storage of cement on its strength. अब ये भी मैंने बोला, जब सीमेंट को हम बहुत समय तक हम उसको जब स्टोर करते हैं तो उसका भी एक डिसएडवांटेज होता है. There is a loss, okay? There is a loss if you store the cement for a very long time. And what is that loss? That loss is in terms of strength, okay? If you keep storing the cement, then it will keep losing its strength with time. Let us see the point. Cement loses its strength by continued storage and becomes lumpy. Okay, if you keep on storing cement for a long time, it becomes lumpy, it forms lumps, and then it also starts to lose its strength. It is unsuitable due to the loss of capacity of hydration. So once if it becomes too lumpy, if the strength is too less, then it becomes unsuitable, because then the cement will not be able to react with water and hydration reaction can take place. And if hydration reaction does not take place, then the cement cannot gain its strength. So let us see how much strength does it lose. First one, cement as received from factory 100%. ठीक है, यानी कि when it's brand new, fresh, just manufactured, its strength is 100%. After 3 months 85%, यानी कि आफ्टर 3 महीने में इतना फर्क आया, उसका स्ट्रेंथ 100 से 85% कम हुआ है, यानी कि 15% कम हुआ है. आफ्टर 6 months 75%, यानी कि 1/4 ऑफ स्ट्रेंथ पूरा खत्म हो चुका है. आफ्टर 1 year 60%, ओके, एक साल तक रखेंगे तो और उसका ऑलमोस्ट 60% स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा. एंड आफ्टर 2 years, oh sorry, they have done this mistake, okay, I'm sorry, I have done some mistake. After 1 year it's 40%, 48%. After 2 years it's 60%, okay, I'm sorry, you can please correct that. Now let us see adulteration of cement. Now what is the meaning of adulteration? Adulteration मीन्स एनी चेंज. जब आप कोई भी चीज़ में चेंज लाते हो, ठीक है, कोई भी चेंज लाते हो, उसको थोड़ा अलग बनाते हो, तो हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट. सो व्हाट इज दैट? लेट अस सी. द प्रोसेस बाय विच सीमेंट इज मेड impure or inferior by addition of improper substance like fly ash, stone dust, surkhi or lime, silt and clay is called adulteration of cement. Okay, so what is adulteration of cement? When we make cement impure और थोड़ा inferior, यानी कि सीमेंट का प्रॉपर पूरा 100% सीमेंट नहीं, उसको थोड़ा सा impure बनाएंगे. कैसे? उसमें डिफरेंट अलग एडिशन ऑफ अलग अदर सब्सटेंस हम ऐड करेंगे, जैसे कि फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश एक आयरन इंडस्ट्री में जहाँ पर आयरन मैन्युफैक्चर्स होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट. ओके, उसको हम सीमेंट के साथ मिक्स भी कर सकते हैं. तो जब हम सीमेंट 100% सीमेंट नहीं रखेंगे, उसको अलग अलग सब्सटेंस मिक्स करेंगे, जैसे कि फ्लाई ऐश या फिर स्टोन डस्ट, ठीक है, सुर्खी मतलब लाइम, या फिर सिल्ट. सिल्ट यू नो, सिल्ट इज अ सॉइल, ठीक है, एंड क्ले, then it's called adulteration of cement. Okay, matlab when we mix cement with other substance, by adding other substance and making the cement impure, it's called, that process is called adulteration of cement. So there are many ways in which adulteration of cement can be done. Okay, we can change the property of cement. We can adulterate the cement by many ways. What are those? Number 1, by mixing fine powdered fly ash, just like I said. Okay, so fly ash jo hota hai, it's a byproduct of manufacture of iron industry. So that fly ash do have some silica, lime and alumina. So because of that, it still has some cementitious property. Okay, so because of which we can use fly ash
to mix with cement because it has some cementous property. Number 2, by mixing fine silt. अब silt क्या होता है? Silt is also a soil. If you have studied in first year, then it's good. But if you haven't studied, then silt हम किसको बोलते हैं? Silt are those soil whose particle size ranges from 0.075 mm to 0.02 mm. ठीक है? Whose particle size is 0.075 mm to 0.02 mm, sorry 0.075 mm to 0.002 mm, then उसको हम बोलते हैं silt. Okay, 0.075 mm to 0.002 mm. Third, by mixing very fine stone dust from quarries. Okay, या फिर हम पत्थर जो स्टोन का डस्ट जो है उसको भी हम मिक्स करते कोई सीमेंट के साथ. फोर्थ पॉइंट, by mixing lime powder. Okay, या फिर हम उसमें लाइम भी मिक्स कर सकते हैं. Okay, lime powder is also your surkhi. What you say in Hindi शायद surkhi बोलते हैं उसको, lime, calcium oxide powder. Okay, fifth one is by mixing old cement which has lost its strength. Or in some cases लोग क्या करते हैं कि they even mix old cement with new cement. तो ये सब क्या है? These are the ways to adulterate the cement, यानी कि cement को थोड़ा impure बनाने को. Okay, now let us see the types of cement. Okay, there are many types of cement and we are going to see each one of them and how each one of them differs from each other and the reason why there are different types of cement also manufactured. Okay, the first one is ordinary Portland cement. We also call it OPC. आपने बहुत देखा होगा. And this is also called normal cement because this is the cement that has been used worldwide. Everywhere we use this cement because this is the most common cement and it has all the properties that normally a normal cement wants. A normal cement in normal weather condition acquires. So that's why we use this OPC. So what are the properties? Number 1, fineness. Okay, the residue of OPC does not exceed 10% when sieved through IS sieve number 9. If you remember guys, if you don't remember, please go through fineness test, and if you remember, well and good. So हमने वहाँ भी देखा था कि fineness का value जो है, it should not exceed more than 10%. So this is what it says. If it is an OPC, then its fineness should not exceed more than 10%. यानी कि 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसका fineness. Second, soundness. Its expansion is not more than 10 mm. So similarly, अगर वो OPC है तो उसमें soundness ज़्यादा से ज़्यादा maximum expansion 10 mm तक हो सकता है. उससे कम हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. That is what an OPC should have properties. Setting time. Okay, अब setting time, initial setting time IST should not be more than 30 minutes. Okay, IST 30 minutes से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और final setting time not more than 10 hours. यानी कि उसको initial set होना, मतलब अभी मैंने समझाया initial set होना क्या है, जब अपना सीमेंट जो है थोड़ा सा अपना प्लास्टिक प्रॉपर्टी लूज होना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो उस टाइम तक हम उसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम. और फाइनल सेटिंग टाइम क्या था? जब वो सीमेंट में जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी है कंप्लीटली लूज हो जाता है. व्हेन सीमेंट कंप्लीटली loses its plasticity, then that time is known as final setting time. Okay, now similarly compressive strength भी है. Okay, compressive strength mainly depends on the type of cement है. जैसे हमने पढ़ा है 33 grade cement है, 43 grade, 53. So it should achieve according to its days. Now what are the uses of OPC? Okay, mainly कहाँ use करते? Let us see uses. It is used in structures subject to the action of water such as foundation, underwater reservoirs, watertight floors, dockyards. Okay, they are used in all these foundations. Okay. Second, it is used for making concrete mortar, plain concrete, and reinforced concrete. Okay.
for making concrete बनाने के लिए, mortar बनाने के लिए. Mortar क्या होता था? What is mortar? Mortar is a mixture of cement, water and only soil. Okay, cement, water and soil, sand. Then it is used for plastering and painting work also. Fourth point, it is used for drainage and water supply works. Fifth, it is used for protecting the external faces of building or other engineered structures from weathering action. ठीक है, तो सब ये सब buildings वगैरह engineering structures वगैरह बनाने के लिए protect करने के लिए भी हम क्या use करते हैं OPC, okay, because of its properties. So we will leave our lecture up to here, and in next class in next lecture we will start with rapid hardening cement. Okay, thank you for your time. Okay, I hope you understood. If you have any doubt, please feel free to mail me. All right, thank you.